हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। सो आज हम एक बुक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। ये एक फ्रेंच में लिखी गई बुक है जिसको बोल सकते हैं ली प्लासियोर दू टेक्स्ट, शायद ऐसे कुछ बोलते होंगे। एंड ये जो बुक आई थी 1973 में, and it is the book which was written by the French literal theorist जिसका नाम है रोलैंड बार्थ्स। रोलैंड बार्थ्स and in this book he covered various topics. We will study all about this, and pages total हैं इसके 105। इसमें है few writers in the cultural study and the social sciences have used and developed the distinction that Roland Barthes make. ओके, सो समरी जो है वो हम डिस्कस करेंगे। और एक और बुक है जिसका नाम है एस एंड जेड। सो हम उसके बारे में भी थोड़ा कुछ समझेंगे क्या है, क्या चीज़ है। ओके, सो द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट, इट सेज द प्लेजर, PLEASU, प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट। देखो यार, रोलैंड बार्थ्स की ये जो बुक है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट केम इन द 1973। इट इज़ द वन ऑफ हिज मोस्ट personal and poetic work, less like his earlier structural studies जिसका नाम है, जो पहले आई थी, जिसका नाम था mythologies, और एक एस एंड जेड नाम की एक और बुक है। ये थोड़ी अर्लियर स्ट्रक्चरलिस्ट बुक है एंड मोर लाइक फ्रेगमेंटरी philosophical meditations. Instead of producing a semantic theory, Barthes reflect on what makes reading pleasurable, कि भाई the act of reading, why it is so pleasurable, इतना मज़ा क्यों आता है। मैंने इससे पहले एक वर्ड के ऊपर, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी जो लकान ने दिया था। उसका नाम था, सुनो अब, jouissance। अब भाई ये प्रोनाउंस मेरे को करने इसलिए नहीं आता क्योंकि मेरे को फ्रेंच आती नहीं है, बट आई रियली लव द फ्रेंच पीपल, द वे दे आर्टिकुलेट स्टफ। तो देखो यार, द प्लेजर ऑफ रीडिंग इज़ कॉल्ड एज, मैं स्पेलिंग लिख के बताता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, JOUISSANCE। ओके, दिस इज सी, और ये फ्रेंच वर्ड है। अब इसको बोलते हैं jouissance। अब मेरे को फ्रेंच आती नहीं, तो ठीक है। तो बात इसमें बताता है कि व्हाट मेक्स रीडिंग प्लेजरेबल एंड हाउ द प्लेजर इज बाउंड अप एंड डिज़ायर, इरोटिसिज्म एंड टेक्सुअल structure. The book is composed of short fragments, offer only a paragraph long, ठीक है, एक पैराग्राफ में लिखा गया है इसमें, which allow Barthes to weave between the critical theory, personal reflections and provocative analogies without having to follow the linear arguments। ठीक है जी। अब इसका जो काम है उसके बारे में बता देता हूँ। जो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट देता है, उस कॉन्सेप्ट का नाम है प्लेजर वर्सेस ब्लिस। ठीक है, जिसको ये बोलता है प्लेजर वर्सेस जोइसेंस। ठीक है, यही ऊपर वाली चीज़।
अब ये क्या चीज़ है? वन ऑफ द बाथ्स की डिस्टिंक्शंस इज़ बिटवीन, सबसे पहली चीज़ जिसको बोलते हैं PLESURE, प्लेजर, जिसको ये बोलता है प्लासीर। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग हो सकती है क्योंकि भाई मेरे को फ्रेंच आती नहीं है। अब ये क्या है? द कंफर्ट, द सेटिस्फैक्शन एंड द enjoyment we get from the text that confirms our expectation and fits into our reading habit comes from the reading texts that are readerly, जिसको बोलते हैं that is traditional, coherent, culturally familiar। देखो भाई, हमें टेक्स्ट पढ़ने का मज़ा आता है क्योंकि वो हमें कंफर्ट देता है, सेटिस्फैक्शन देता है, मज़ा देता है। एक वो होता है जो हमें टेक्स्ट पढ़ते पढ़ते जो है मज़ा आने लग पड़े, ठीक है, और वो फेमिलियर साउंड करता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे ट्रेडिशन के साथ मैच करता है, कोहेरेंट एंड कल्चरल फेमिलियरिटी होती है उसमें, कंपेयर टू अ वार्म बाथ। ठीक है, इसने कंपेयर किया है उसको कि गर्म पानी से जब हम नहाते हैं तो उससे क्या होता है, वो नॉन डिस्टर्बिंग होता है, ठंडा पानी बहुत ज़्यादा चुभता है। ठीक है, एंड रीएश्योरिंग, ग्रेटिफाइंग। ओके, सो ये कुछ वर्ड्स हैं जो ये बताता है एज एग्जांपल। और अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें जिसको ये बोलता है, ये लकान से ही लिया गया है, दिस इज इक्वल्स टू ब्लिस स्लैश एक्सटेसी। अब ये क्या चीज़ होती है भाई? देखो, अ मोर इंटेंस transgressive experience, a kind of rapture, the destabilize the reader's identity and cultural norms। जो रीडर की आइडेंटिटी है उसको हिला के रख दे, थोड़ा शॉक करे, ठीक है, थोड़ी सी एंग्जाइटी दे, थोड़ा सा हल्का सा पैराडाइम शिफ्ट लाए, फाउंड इन राइटरली। ठीक है, ये जो होता है रीडर लाता है, ये जो होता है ये रिटन फॉर्म में होता है, रिटरली। ठीक है, अगर इसको बोले हम स्क्रिप्टेबल। ओके, अगर इसकी बात करें तो एक्सपेरिमेंटल, ओपन एंडेड वर्क्स दैट चैलेंज narrative expectations and demand active participation, not always pleasant in the conventional sense, can be disorienting, even uncomfortable। Okay, this split is precursor to many later post-structuralist idea about destabilizing the subject and the politics of form। अगर हम बात करें रीडरली वर्सेस राइटरली टेक्स्ट की, so this is the continuation of what Roland Barthes had outlined in S and Z, but here it's connected to desire। ठीक है, सो रीडरली की बात करी जाए या इसको बोले लाइजेबल। ओके, प्रेजेंट्स अ क्लोज वर्ल्ड वेयर मीनिंग इज ऑलरेडी फिक्स्ड। ठीक है, द रीडर कंज्यूम्स पैसिवली, कि भाई रीडर जो है वो पैसिवली कंज्यूम करी जा रहा है। अगर हम राइटरली की बात करें, सो इट इज़ स्क्रिप्टेबल।
That is, offers an open field opportunities where the reader participates in creating meaning. जो रीडर है वो पार्टिसिपेट कर रहा है इन क्रिएटिंग मीनिंग क्रिएट करने में. द एक्ट ऑफ रीडिंग बिकम्स अकिन टू राइटिंग. ठीक है. द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट डिपेंड्स ऑन द इंटरप्ले बिटवीन दीज टू. Even experimental work needs some readerly elements to give an anchor, and conventional work can still produce joints if the readers engage them in unexpected way. ठीक है. Erotics of reading. बार्ट्स ने क्या किया कि रोलैंड बार्ट्स ने कि इसने बताया कि यार जो एक्ट ऑफ रीडिंग है ना, इट इज़ एरोटिक्स. ठीक है, मज़ा आ जाता है. तो एरोटिक्स ऑफ रीडिंग, अगर हम इस चीज़ के बारे में बात करें, ये मेरे ख्याल से लकान ने भी इसके बारे में बात की है, इफ़ आई एम नॉट श्योर. वे ऑफ या अगर आप एक ओके, I'll make a separate video about this. तो भाई सेम ना, जिसको बोलते हैं erotics ऑफ रीडिंग. ठीक है, ये होती है कि the text seduces the reader, promising satisfaction but also withholding it. Desire comes from delay, interpretation, the gap between the expectation and fulfillment. Like physical exercise, textual pleasure involving rhythm, teasers, and the moment of climax. For Barthes, this metaphor isn't just decorative, it's the core of how we think about language and desire. The text becomes bodily, with texture, spells, and surface, and the reader become a lover, not a consumer. Okay. If I talk about fragment form, the book own styles enact what is describes no strict thesis structure. Short, discontinuous fragment invite the reader to wonder. This openness mirrors the writerly quality. The reader must assemble meaning. Politics of text, although less overwrought political than S and Z, the pleasure of the text hints that readerly text reinforce dominant ideology because they are comfortable, predictable. Writerly text resist ideological clause by demanding active reading. ठीक है. Pleasure and bliss are not apolitical. What a culture defines as pleasure is shaped by social and ideological forces. If I talk about language, intertextuality, and the death of the author, Barthes point his post-structuralist stance. Every text is a wave of other text. The pleasure comes from recognizing, misrecognizing, and rewaving them. The author is no longer the sovereign source of the meaning.
Pleasure is located in play between text and reader. If I talk about structure and desire and structure, a desire in reading doesn't just happen. It's okay structured by codes, that is cultural, literal, and symbolic. If I talk about interruption is caused by gaps, pauses, ellipses. If I talk about texture, it is style, it is rhythm, it is tone. Okay, so Barthes' point, pleasure is not just context based, it's formal. Okay, so if we do the comparison between the pleasure talk about aspect, so we'll compare now with the pleasure of text versus SNG. It came in 1973 and it came in 1970. So this is the more older work, this is the more new one as compared to the other. So the main idea was okay. Okay, so the main idea is to explore the subjective, erotic, and affective dimensions of reading, pleasure, bliss, theorize, okay, and out here conduct a close reading of a short story by the name of एक शॉर्ट स्टोरी है, उसके बारे में इसने बात की हुई है, BARRA pricing. Okay, so what he did in this, it is the story to demonstrate a structuralist narrative analysis. Okay, so if I talk about method in this, fragmentary, poetic, personal reflection. Okay, this is systematic coded breakdown of the text in 561. What are these called? These are called as 561 लेक्सिस करके कुछ इसने ब्रेक डाउन किया था टेक्स्ट को. दैट इज़ यूनिट्स ऑफ मीनिंग बोल सकते हैं इसको. ओके, देन ही टॉक्स अबाउट टोन. अगर हम टोन की बात करें तो काफ़ी इंटीमेट है, प्लेफुल है, सजेस्टिव है, sometimes ambiguous. If we talk about this book, this is more analytical. Okay, taxonomy, it is rigorous. Okay, though still literary. Okay, now if we talk about a central concept, अगर हम सेंट्रल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो ये प्लेजर वर्सेस ब्लिस,
रीडरली वर्सेस राइटरली एज इरोटिक टेंशन, इसमें बात कर रहा है। अगर इसकी बात करें तो ये बात कर रहा है रीडरली वर्सेस राइटरली एज कैटेगरीज ऑफ टेक्सचुअल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अगर हम इसकी बात करें फॉर्म की, ठीक है, FORM, अगर हम इसकी बात करें फॉर्म की, इट इज़ discontinuous paragraphs, aphorism. If we talk about this, it is continuous critical commentary with the numbered segments. Okay, if we talk about view of reader, this is active co-creator desiring subject. If we talk about this, decoder of codes and participate in meaning making. Okay, if we talk about politics, अगर हम politics की बात करें तो it implied pleasure linked to ideologies but less analyzed. If we talk about this is more explicit. Readerly text are aligned with the dominant ideology, and writerly with the resistance. Okay, so अगर हम इसके एग्जाम्पल टेक्स्ट के बारे में बात करें, so there is none, use hypothetical or abstract examples. If we talk about this, it talks about Balzac's की एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है Racine, ठीक है, as the concrete object of study. इसने इसी शॉर्ट स्टोरी के ऊपर स्टडी की थी। एंड रिलेशनशिप टू, अगर हम बात करें इसका रिलेशनशिप टू स्ट्रक्चरलिज्म, मूव अवे फ्रॉम स्ट्रक्चरलिस्ट मेथड toward postmodernistic and personal reflection, purely structuralist in the method but with the post-structuralist seed. इसने जो बात की है वो की है plurality of meaning के बारे में बात की है। डेथ ऑफ द ऑथर के बारे में बात करें तो this is implicit and focuses on reader's pleasure over author's intent, कि भाई जो ऑथर ने बोल दिया उसका इंटेंट तो कुछ और होगा, आप अपना देखो, आपका जो है वो रीडर को मजा आना चाहिए इसमें, रीडर शुड एंजॉय दिस एंड resources. This is explicitly operates under the principle analyzing the text without a biographical resource. So how they differ in split. S and Z is a microscope. Roland Barthes जो है dissect a single text with the forensic precision, showing how meaning is produced by codes, whereas the pleasure of the text is a love letter. ठीक है, Barthes muses about why he read at all and what excites us and how reading mirrors erotic desire. If S and Z is about the mechanics of the meaning, the pleasure of the text is about the phenomenology of the enjoyment. Why the shift? अगर हम shift के बारे में बात करें
तो between S and Z to the pleasure of the text, बात्स जो है वो बोल रहा है कि become less interested in structuralist system building, was influenced by the psychoanalysis, the work of definitely Lacan, and the structuralist idea of textual opening, moving towards the more personal and subjective style, paving the way for Roland Barthes. And by Roland Barthes, 19 if I compare his work, रोलन बार्ट्स ने एक और काम लिखा था जिसका नाम था कैमरा लुसिडिया in 1980. So this is how I would like to end this video with.